My dear friends, welcome back to the RK Pharma Rockstar YouTube channel. So this is the Swaraj batch. This is free batch for you. This is designed for your upcoming pharmacist examination. आपका कारागृह का नॉन टेक्निकल हुआ है, अभी आपका टेक्निकल पेपर बाकी है. Those who qualify non technical examination with minimum 45% of 120 मार्क्स उनको ही अलाउ किया जाएगा नेक्स्ट एग्जामिनेशन में. ठीक है. सो ऑलमोस्ट लोगों को तो 45% मिल ही जाएगा, बट देखते हैं आपके लिए वो मेरिट लगाते हैं या फिर सबको अलाउ करते हैं. ठीक है. सो तब भी आपको प्रिपेयर करना है. अगर आपका अच्छा नहीं गया है तब भी करना है, क्योंकि DSSSB का ऑलरेडी अप्लीकेशन तो स्टार्ट हुआ है. जिन जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया है आपको अप्लाई करना है. ठीक है. देन अमरावती की भी वैकेंसी अपकमिंग है, BMC ऑल्सो अपकमिंग, एंड RRB की भी अपकमिंग है, MPSC भी अपकमिंग है. ठीक है. इन सब के लिए आपको पढ़ना है. अगर आप इन सब के लिए अभी नहीं पढ़ोगे तब भी आपको DSSSB के लिए पढ़ना है, क्योंकि DSSSB की वैकेंसी टाइम पे होगी, एग्ज़ामिनेशन टाइम पे होगी. ठीक है. उसके लिए आपको जो भी सिलेबस दिया है सब कंप्लीट करना है. ठीक है. उसके लिए अगर आप चाहो तो आरंभ बैच में आ सकते हो. ये वाला पेड बैच है जो कि निग्लिजिबल कॉस्ट रखा गया है आरंभ बैच के लिए. ठीक है. बहुत कम कॉस्ट रखा गया है, बहुत कम. सो अगर आपको ज्वाइन करना है, यहाँ पे टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल दोनों भी कवर कराएंगे. ठीक है. जिनको पढ़ना है मुझसे आप पढ़ सकते हो. बस आपको क्या करना है, सिंपली RK फार्मा के बिसाइड्स में यहाँ पे एक ज्वाइन बटन दिया है, बस आपको सिंपली ज्वाइन करना है. ठीक है. और बहुत लोगों का प्रॉब्लम आता है कि पेमेंट नहीं हो रहा है. तो अगर आप बैंक चेंज करोगे, जैसे कि आपका स्टेट बैंक वगैरह का नहीं ले रहा है, वो स्टेट बैंक वगैरह का अकाउंट से नहीं पे हो पा रहा है, अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया ट्राई करते हो ना, तो हो जाएगा आपका. नेक्स्ट, और ऑलरेडी कुछ क्लासेस एडेड भी है आरंभ बैच में. आप प्रीवियस क्लासेस कंप्लीट कीजिएगा, तब तक के मैं आपके लिए और भी क्लासेस ऐड करूँगी. ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन. दिस इज़ द टेस्ट सीरीज. किसके लिए है? कारागृह फार्मासिस्ट एज वेल एज DSSSB एग्जामिनेशन के लिए. सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन. द इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इनटू द टिश्यू इज डिटरमाइंड chiefly by. The initial distribution of drug into the tissue is determined chiefly by. The first option here is that rate of blood flows to the tissue. Second one, plasma protein binding of drug. Third one, affinity for the tissue. And the last one, stomach emptying time. Which one is correct? The initial distribution of drug into the tissue is determined chiefly by the rate of blood flows to the tissue. Option A is correct one. Which option is correct? Option A is correct one. Move on to the next question. Question number second. Plasmodial resistance of chloroquine is due to what? The first one, induction of activating enzyme. Second one, change in acceptor structure. Third one, increase in the activity of DNA repair mechanism. And the last one, decrease the carrier mediated drug transport. So which one is correct? So option D is correct one. So which option is correct? Option last, that is D is correct one. Decrease the carrier mediated drug transport. Next question. Cancer therapy can be curative in all of the following disseminated neoplasms except the first one, Hodgkin disease. Second, choriocarcinoma. Third, colonic cancer. And the last, testicular cancer. So except what? Except colonic cancer. Option C is correct one. Next question. Microlide antibiotic exert their action by inhibiting the transcription. Second, altering the genetic code. Third,
terminating protein synthesis prematurely, and the last one, post translation modification. So which one is correct? Microlide antibiotic exert their action by. So microlide antibiotic exert their action by terminating the protein synthesis prematurely. Option C is correct one. Next question. Parkinsonism is a common neurological movement disorder. Both levodopa and carbidopa are used. Carbidopa is used because of what? The first is that it crosses the blood-brain barrier. Second, it inhibits the aromatic laminecid decarboxylase. Third, it inhibits the MAOA, and the last, it inhibits the MAOB. So which one is correct? Parkinsonism is the common neurological movement disorder. Both levodopa and carbidopa are used because carbidopa is used because of it crosses the blood-brain barrier. Option A is correct one. Which one is correct? Option A is correct one. Next, name the metabolite. Name the metabolite. कौन सा होता है? The first one, thioguanine. Second, diaguanine. Second, third, cycloguanine. And the last, p-chlorophenyl diaguanide. Which one is correct? Metabolite. तो ये होता है that is cycloguanil. Which one is that? Cycloguanil. Option C is correct one. Option C is correct one. Next question. The thrombolytic agent used is heparin, warfarin, antistryptase and vitamin K. Which one is correct? The thrombolytic agent used is antistryptase. Option C is correct one. Move on to the next question. HIV infection can be clinically controlled with. HIV infection can be clinically controlled with. HIV किससे कंट्रोल करते हैं? By Zidovudine. Option C is correct one. Which one is correct? Option C is correct one. Next question. Phenylketonuria is an example of an inborn error of the metabolism. This refers to the phenylketonuria is an example of an inborn error of the metabolism. This is referred to the first, hormonal overproduction. Second, non-disjunction. Third, atrophy of endocrine gland. And the last, inherited lack of enzyme. So which one is correct? Phenylketonuria is an example of inborn error of metabolism. This यहाँ पे fill in the blank चाहिए था. This is उसके बाद refer to. So that is, which one is correct? Option D is correct one. Inherited lack of an enzyme. Next question. Scratching eases itching because it kills the germs. Second, it suppresses the production of an enzyme which cause itching. Third one, it remove the outer dust of the skin. Then last one, it stimulates the certain nerves which direct the brain to increase the production of antihistaminic chemical. Which one is correct? So option D is correct one. Which one is correct? Option D is correct one. It stimulates the certain nerves which direct the brain to increase the production of antihistaminic chemical. इसका प्रोडक्शन इंक्रीज कराता है एंटीहिस्टामिनिक केमिकल्स का. ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. Move on to the next question. The gland which in the relation to the body size is largest at the birth, then gradually shrink after the puberty is. Which gland is that? The first, thyroid gland. Second, thymus gland. Third, pituitary. And the last one, adrenal. So which one is that? That is thymus. Which one is that? That is thymus gland. Option C is correct one. Next question. The hormone is responsible for
secretion of milk in mother is first ACTH, second adrenaline, third prolactin, and the last one lactogenic hormone. Which one is correct? So hormone responsible for the secretion of milk in mother, that is prolactin. Which one? Option B is correct one. Which one is correct? Option B is correct one. Next question. The first tranquilizer of phenothiazine group of compound is. The first tranquilizer of phenothiazine group of the compound is that. कौन सा होता है ये होता है that is क्लोरप्रोमाजिन. कौन सा होता है? क्लोरप्रोमाजिन. ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ इंसुलिन इन द ह्यूमन बॉडी? क्या होता है मेन फंक्शन ऑफ इंसुलिन? फर्स्ट, टू मेंटेन द ब्लड प्रेशर. सेकेंड, टू हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड. थर्ड, to control the level of sugar in the body, and last, to check the level of iodine in the body. Which one is the function of insulin? कौन सा है? सो क्या होता है मेन फंक्शन ऑफ इंसुलिन? तो इंसुलिन का मेन फंक्शन होता है टू कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल इन द बॉडी. ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट which of the following when taken by pregnant woman is found to be the cause of deformed children? The option are given here. The first, glycerol. Second, thalidomide. Third, xylidine. And the last, none of the above. Which one is correct? Which of the following drug when taken by pregnant woman is found to be the cause of deformed children? सो कौन सा होता है? दैट इज थैलिडोमाइड. ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज दैट थैलिडोमाइड का साइड इफेक्ट क्या होता है? क्या कॉज कराता है थैलिडोमाइड? आपको बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट सलाइन परगेटिव. व्हाट इज सलाइन परगेटिव? कौन सा होता है सलाइन परगेटिव ड्रग? इसाबगोल, फिनोफ्थैलिन, कैस्टर ऑयल, एंड द लास्ट मैग्नीशियम सल्फेट. विच वन इज करेक्ट? So saline purgative is that magnesium sulfate. Option D is your correct answer. Magnesium sulfate. Next question. Penicillinase resistant penicillin is. Penicillinase resistant penicillin is. The option are given here. Amoxicillin, ampicillin, penicillin V and methicillin. Which one is correct? Penicillinase resistance penicillin is that is methicillin. Option D is correct one. Option D is correct one. Next question. Effect of injecting hypotonic saline intravenously. So the effect of injecting hypotonic saline purgative intravenously is that the first, damage to the venous walls. Second, raise in the blood pressure. Third, hemolysis, and the last one, dialysis. So effect of injecting hypotonic saline intravenously, that is hemolysis. Option C is correct one. Which one is correct? Option C is correct one. Next question. BCG vaccines are prepared from the. किससे prepared होता है BCG vaccines? M. tuberculosis. Second, M. microtia. Third, M. bovis, and the last, M. africanum. Which one is correct? So BCG vaccines are prepared from the. किससे prepared होता है ये prepared होता है M. bovis से. किससे होता है? M. bovis. Option B is correct one. B कर लेना. ठीक है. Next question. Drug of choice for grand mal epilepsy are. The option are given here. Phenytoin and sodium valproate. Second, sodium valproate and carbamazepine. Third, carbamazepine and phenobarbital. And the last, phenobarbital and phenytoin. So which one is correct? Drug of choice for grand mal epilepsy are, that is, कौन सा होता है? phenytoin and sodium valproate. Option A is correct one. Next question. Sucralfate is used in the treatment of. The first,
इन ओमेटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डिओडिनल अल्सर, डायरिया। किस में यूज़ होता है सुक्राल्फेट? तो ये यूज़ होता है दैट इज डिओडिनल अल्सर में। ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हिमोलाइटिक जॉन्डिस द फॉलोइंग आर द ट्रू एक्सेप्ट। फॉलोइंग आर द ट्रू एक्सेप्ट मतलब ट्रू वाला कौन सा नहीं है, दैट मीन्स फॉल स्टेटमेंट आपको चूज करना है। द फर्स्ट वन, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल इंक्रीजेस। सेकेंड, एनीमिया इज कॉमन। थर्ड, serum alkaline phosphatase level increases, and the last, liver function test is normal. So which one is correct? In hemolytic jaundice the following are true except, so which one is false? So option D is your correct answer, that is liver function test is normal. Next question, antihypertensive agent, anti सो एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट कौन सा होता है? द फर्स्ट एम्फेटामाइन, सेकेंड साल्ब्यूटामॉल, थर्ड एड्रीनालिन एंड लास्ट प्रोपानोलॉल। विच वन इज करेक्ट? कौन सा होता है? दैट इज प्रोपानोलॉल। ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्सेप्ट द फर्स्ट एमोबार्बिटल, सेकेंड बार्बिटल, थर्ड beprobamate, and the last all of the above. Which one is correct? Which one is correct? That is barbital. That is barbital. Option C is correct one. Next question, centrally acting muscle relaxant. Centrally acting muscle relaxant, the first option is that halothane, second एक सेकेंड, हेलोथेन, सेकेंड डी ट्यूबोकुरारी, सेकेंड थर्ड सक्सनिल कोलिन एंड लास्ट मेफेसिन। सो विच वन इज करेक्ट? सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट दैट इज कौन सा होता है? ये होता है मेफेसिन। ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। कौन सा होता है? ऑप्शन डी इज करेक्ट वन, दैट इज मेफेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, microlide antibiotics. The option are given here: clarithromycin, ciprofloxacin, streptomycin and chloramphenicol. Which one is correct one? Microlide antibiotic में कौन आता है? That is clarithromycin. Option A is correct one. Next question, anti anxiety agent कौन सा होता है? anti anxiety agent, the first imipramine, second thiopentone, third chlorpromazine and the last diazepam. Which one is correct? एंटी एंजाइटी एजेंट्स कौन सा होता है? दैट इज डाइजीपाम। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन। किस में होता है ड्रग ऑफ चॉइस सिप्रोफ्लॉक्सासिन? द फर्स्ट टॉन्सिलिटिस, सेकेंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, third fungal infection and the last one scabies. So ciprofloxacin is a drug of choice in किसमें होता है? That is urinary tract infection. Option B is your correct answer. Next question, antidiarrheal agent include all except. Antidiarrheal agent included all except kaolin, second diphenoxylate, third pectin and the last one magnesium sulfate. So which one is correct? Antidiarrheal agent include all except, that is magnesium except क्या? magnesium sulfate. Option D is your correct answer. Next question, विनक्रिस्टिन is a क्या होता है? विनक्रिस्टिन एंटीबायोटिक होता है, एंटी नियोप्लास्टिक होता है, क्या होता है? विनक्रिस्टिन इज होता है दैट इज एंटी नियोप्लास्टिक। ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। क्या होता है? एंटी नियोप्लास्टिक। ठीक है, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरप्रोमाजिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एंटी साइकोटिक इफेक्ट? विच प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरप्रोमाजिन is responsible for its
antipsychotic effect. The first, antidopaminergic and antidopaminergic. Second, antimuscarinic. Third, adrenoreceptor blocking. And the last one, anti-5-HT property. So which one is correct? So option B is correct one, that is anti-muscarinic. Which one is correct? Anti-muscarinic. Next question. Drug useful in petit mal epilepsy is. The drug which useful in petit mal epilepsy is. The first one, phenytoin sodium. Second one, ethosuximide. Third one, carbamazepine. And the last one, phenobarbital. Which one is correct? The drug used in petit mal epilepsy, that is ethosuximide. Option B is your correct answer. Which one is correct? Option B is your correct answer. Next question. Neurotransmitter which is sympathetic. Neurotransmitter which is sympathetic. Which one is correct? The options are given here. Acetylcholine. Second one, noradrenaline. Third one, glutamine. And the last one, glycine. Which one is correct? So, neurotransmitter which is sympathetic होता है, that is noradrenaline. Option B is correct answer. Which one is correct? Option B is correct one. Next question. Drug obtained from animal source is that. कौन सा होता है? Drug obtained from animal source. Which one is correct? So drug obtained from animal source होता है, that is heparin. Which one is correct? Option B is correct one. Which one is correct? Option B is correct one. Next question. Drug classified under narcotic drug and psychotropic agent include all except. Drug classified under the narcotic drug and psychotropic agent include all except. The first, ephedrine. Second, cocaine. Then heroin. And the last, hashish. Which one is correct? So option A is correct one, that is ephedrine. Which one is correct? Option A is correct one. Next question. Analgesic from opium poppy is that. The first, diazepam. Second, morphine. Third, aspirin. And the last, diclofenac. Analgesic from opium poppy, which one is correct? So ये होता है morphine. कौन सा होता है? Morphine. Option B is correct one. Next question. The mechanism of action of penicillin is. The mechanism of action of penicillin is. The first, by inhibition of protein synthesis. Second, by interference with ribosome function. Third, by anti-metabolite action. And the last, by interference with cell wall synthesis. Which one is correct? The mechanism of action of penicillin is that. So which one is correct? Option D is correct one, that is by interference with the cell wall synthesis. Next question. Semi-synthetic drug. Semi-synthetic drug. So semi-synthetic drug are penicillin G, ampicillin N, rifamycin B and streptomycin. Which one is correct? So which option is correct? Semi-synthetic drug, that is पेनिसिलिन जी. ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट आंसर. सो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, दैट इज़ आरंभ बैच में. सारे क्वेश्चन नेक्स्ट कंप्लीट करेंगे आरंभ बैच में. ठीक है, यहाँ से कंप्लीट करते हैं आरंभ बैच में. बहुत सारी लंबी पीडीएफ है. सो जिनको भी ज्वाइन करना है आप ज्वाइन भी कर सकते हो. जिनको नहीं ज्वाइन करना है, खुद से करना है, खुद कर सकते हो. ठीक है. सो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस क्लास. एंड जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब करें एंड ऑल ऑफ़ यू गाइस प्लीज़ शेयर करें. ठीक है. सो थैंक यू फ्रेंड.